Very good evening, everyone. Warm welcome for the session. Today we have a little different session. Usually, every single day, we have one topic and we speak on that topic. We try to understand that a certain kind of trauma, if it is happening in our life, then how can we deal with it? How can we recover from it, etc., etc. But just, I think, day before yesterday, I was having a word with someone. I was talking to someone and she told me that I just can't accept this fact that I have done so many wrong things in my lifetimes and I have to go through so much of trauma. So I felt that this question might be there in the hearts of many people. शायद बहुत लोग ही ऐसा सोचते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अपने पुराने जन्मों का कर्म इस जन्म में हैंडल कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और हमारे जिंदगी में जितनी ट्रॉमा आ रही है वो हमारे ही पिछले जन्मों की वजह से है. So I thought that why not share a few stories with you that is going to actually explain to you why do we have to go through these trauma? Why do we have to go through any kind of pain, any kind of torture or any kind of losses in our life? And what is the way in which we can avoid it? सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि हमारे जिंदगी में ट्रॉमा क्यों है. ये भी जानना जरूरी है कि इस ट्रॉमा को हम अवॉइड कैसे करें, कैसे इसको हील करें, कैसे इससे अपने आप को बचाएं, अपने फ्यूचर को बचाएं. So that is the reason why I decided that today's session I will be sharing 2-3 stories with you from the Mahabharata, from the Purans, everywhere, and try to explain why does this process happen with us. Okay, so आज का हम लोग forgiveness जरूर करेंगे, overall करेंगे for any and all trauma, but इस stories को share करना I thought बहुत ज्यादा जरूरी है आज. जस्ट इस एस्पेक्ट को समझने के लिए कि हमें लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और उससे कैसे बचा सकते हैं. ओके, so the first story that I would like to share with you is the story of Draupadi. uh, Draupadi we all know, right? A character of Mahabharata, and she was a princess. She got married to Arjuna first. अर्जुना का क्या स्टोरी था, उनको स्वयंवर रचाया गया था द्रौपदी के लिए और वहां उनको जाके जो स्वयंवर का कॉन्टेस्ट था वो कॉन्टेस्ट में उनको पार्टिसिपेट करना था. द्रौपदी को जीत के वो घर लेकर आए थे, राइट? सो जब वो उनको घर लेकर आए तो उन्होंने उनकी जो माता थी, अर्जुना's mother Kunti, she was sitting and doing her worship. She was praying to God that time. Okay, and Arjuna from behind, he called out and said, "Hey mother, see what I have won today." उन्होंने जीत के लाए थे ना, वो स्वयंवर से जीत के लाए थे ना द्रौपदी को. So he said that, "Mother, see what I have won today." And Kunti said in a very general way, the way she usually speaks, whatever you have won, please all 5 of you brothers distribute among yourselves. Share it with your 5 brothers. Her language was share it with your 5 brothers. Now, at that point of time, in those ancient days, it was, a custom that you have to follow what your mother says. You cannot disobey your mother's language. So they had to share Draupadi. So Draupadi had to marry the other 4 brothers as well. But here, Kunti was very, very upset. She was in guilt. She was feeling so bad that, what did I do? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने एक सामान सोच के कि मेरा बेटा कोई चीज जीत के लाया है, 5 भाइयों में उसे वो शेयर कर ले, वो सोच के मैंने एक जीते जागते इंसान को शेयर करने के लिए बोल दिया. तो वो बहुत गिल्ट में जा रहे थे. तब श्री कृष्ण आए. Lord Krishna came to Kunti at that point of time and told her that you need not go into guilt. Nothing in life happens without a reason. Draupadi, in her past incarnation, she had done a lot of penance, sadhana,
द्रौपदी ने पिछले इंकारनेशन में बहुत सारी साधना करके लॉर्ड शिवा से वरदान मांगा था कि आई वॉन्ट अ हस्बैंड who will be extremely handsome, beautiful to look at, intelligent, tremendous amount of power, strength. He must be this, he must be that. She had asked for lots and lots of good qualities in her husband. Then Lord Shiva said that it is not possible for one human being to have all these qualities. Only God can have all qualities. No human being can have it. So, in your next incarnation, you will be married to 5 people, 5 men with these qualities. लॉर्ड शिवा ने क्या कहा कि भगवान के अलावा किसी के पास भी ये सारे क्वालिटीज एक साथ में नहीं हो सकता, इसलिए अगले जन्म में आपको 5 पतियों से शादी करना पड़ेगा और 5 जन के अंदर एक एक इनमें से एक क्वालिटी होगी। तो ये क्या था? कुंती ने जो गलती की उसके लिए वो गिल्ट में जा रही थी, पर लॉर्ड शिवा ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जिंदगी में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होता। ये द्रौपदी का ही वरदान था। द्रौपदी ने साधना की थी, वरदान मांगा था, उन्हें वरदान मिला कि आपको अगले जन्म में 5 पति मिलेगा। Now, in this case, now let me connect this to our day-to-day life. हम अपनी जिंदगी के साथ इससे अगर कनेक्ट करेंगे, then you will see that many times we do a mistake, we go through a mistake, we commit something wrong, and then we go into guilt, right? We go into guilt. हमें बुरा लगता है कि इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? Why did I do such a mistake? मेरी वजह से कोई और सफर कर रहा है. Somebody else is having a very tough time, maybe is going through some kind of a curse, etc., etc. We think so many things and we go into guilt. But the truth is that nothing in this world happens without a reason. अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथों कुछ हो रहा है, चाहे वो सही हो, वो गलत हो, वो कुछ भी हो, उसके पीछे विधि का कोई विधान होता है, कोई वजह होती है, कोई रीजन होता है। अपरेंटली हमें लगता है कि सब बुरा हो रहा है, अपरेंटली हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, गुनाह हो गया, पर एक्चुअल में डेस्टिनी में वो चीज पहले से लिखी हुई होती है। डेस्टिनी में वो डेस्टिन्ड होता है कि ऐसा ही होना है। कोई पिछला रीजन होता है जिसकी वजह से वो चीज घट रहा है। अगर आपके हाथों आज कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर आपके हाथों आज कोई किसी की प्राण चले गए, अगर आपके हाथों आज कोई ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया, definitely it's not the right thing to do. I will not say that you should be careless and you should just let anything happen. No, but then everything has a reason behind it. Everything has a reason behind it. We human beings, we cannot understand the reason so easily. However, every trauma can be taken up as a lesson. आप हर ट्रॉमा को एक शिक्षा की तरह लेकर उससे कुछ सीख सकते हैं। हमारे जिंदगी में कोई चीज हो गया, कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी चीज हो गया, उस चीज को अपनी पूरी जिंदगी नहीं बना के, उसी चीज को अपनी जिंदगी का अंत नहीं सोच के, हम हमेशा ये सोच सकते हैं कि ये अगर मेरी जिंदगी में हुआ है, इसके पीछे एक रीजन है, कोई कारण है, हमारे पिछले जन्मों से कनेक्टेड है। हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस and move on in life, have a better life, learn the lesson, have a better life. Okay, so now I will share another story with you. Same with Draupadi. I'm taking the same character. Why? To explain to you कि एक ही इंसान के जिंदगी में उनके कितने सारे जन्म अफेक्ट करते हैं। द्रौपदी का ही एक और स्टोरी, उनका वस्त्रहरण। The time when Draupadi was insulted in front of so many kings and rulers and everyone. Why? Because her husband had lost her
in the game of dice, in the gambling. So Yudhishthir was doing this gambling with Duryodhan, and there was a lot of treachery, cheating, and everything was going on. And Yudhishthir lost Draupadi in the gambling. What did happen? Yudhishthir, Duryodhan brought Draupadi into the entire session, into the seminar which they were having, the games that they were having, and she was insulted. Vastraharan jo hua of Draupadi. Now, why did that happen? Now, Draupadi went to Lord Krishna. Lord Krishna was the one who saved her, right? He blessed her so that her sari becomes so big that nobody can open that sari completely. They kept on trying, but the sari did not open. Lord Krishna saved Draupadi. But after this whole incident, Draupadi went to Lord Krishna and asked him, why did this happen to me? Why did I have to go through this insult? Why was my sari taken off during this entire process? Then Lord Krishna gave her the power to go back and look into her incarnations. 13 incarnations back, Draupadi was a Gandharv. She was like, a person who was in a village, and she was traveling from one place one day. Now she saw that in that incarnation, she was in the body of a man. He was a Gandharv. He was the body of a man. Now, when she was traveling, she saw that some young women were taking a bath in the pond. Like पुराने जमाने में होता था ना कि औरतें लेक में पॉन्ड में नहाने जाते थे, right? So he took away their clothes. He stole their clothes. And in spite of many, many requests by the ladies, he did not return those clothes to them, just out of fun. He wanted to have some fun, so he took away the clothes of the ladies who were taking a bath in the pond, and he did not return the clothes. This karma came back to her in the form of her insult in front of all those ministers and everybody. उनका वस्त्र हरण जो हुआ वो इसी कर्मा का रिटर्न था, क्योंकि उन्होंने भी उन सारी लेडीज का कपड़ा ले लिया था, उनके वस्त्र ले लिए थे जब वो लोग नहाने गए थे. श्री कृष्ण ने उनको तब बताया. Now what does this show? Do we go through some traumas in our life? When we feel insulted, when we feel dejected, when somebody takes advantage of us? Do we also go through at some point of time some kind of a physical trauma, sexual trauma, some kind of accidents? Why? Because it was written in our karma, because it was written in our destiny. 13 janam pehle, 13 incarnations back, when that Gandharv, the soul of Draupadi, who was there inside that body of the Gandharv, 13 incarnations back, she committed a mistake. He committed a mistake. At that point only, it was written in the destiny. The person who sits up there in the home of God, he had only written it that this soul, 13 incarnations later on, will go through this kind of a trauma. And those the ladies who were there in that pond, ये भी बोला था कृष्ण ने कि वो जो ladies थी जो उस pond में नहा रही थी और आपने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, वो भी कौरव बन के आए थे. और वहां पे जो 100 कौरव थे उसमें से वो भी लेडीज थी जो उस जन्म में कौरव बन के आए थे. So you see, nothing goes beyond the calculation of God. Nothing goes beyond destiny. कुछ भी आपके डेस्टिनी से बाहर नहीं होता है. आप एक कर्म एक बार करते हो, आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, चुपके से ये गलती कर लेते हैं, चुपके से ये मजा ले लेते हैं, चुपके से ये झूठ बोल देते हैं, चुपके से किसी का नुकसान कर देते हैं.
कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं चलेगा, बट इट इज एक्चुअली अकाउंटेड, उसका हिसाब किताब लिखा जाता है कहाँ, वहां. So naturally you cannot deceive God. God cannot be mocked. God cannot be deceived. You cannot hide something from God. You can hide it even from yourself. आप अपने आप से भी झूठ बोल सकते हो कि नहीं नहीं, मैंने जो किया वो गलत नहीं था, मैंने जो किया मैंने अपने परिवार के लिए किया, मैंने चोरी की, मैं क्या कर सकती थी, मेरे परिवार वाले भूखे मर रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, इसलिए मैंने चोरी की. आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो. You can give the whole world's justification to yourself. I am correct. I did not do anything wrong. I had to do this. There was no other way out. I have tried to do this because I want to save my family. I have tried to do this because I wanted to take revenge. This person did bad to me. I also did bad to this person. I am justified. I did not do anything wrong. You can say whatever you want to say, but it will come back to you one day. And that time, you will have no way of escaping from there. भागने का कोई तरीका नहीं है. So what is today, whatever is happening with you, no matter how bad it is, no matter how torturous it is, no matter how traumatic it is, you will have to accept it as your own karma. You will have to accept it with a thought form in your mind that everything that has happened because of your own past karma. Nobody else is supposed to be blamed for it. द्रौपदी यहाँ सबको ब्लेम कर सकती थी. मेरे पति ने मुझे हराया, दांव पे रखा. क्यों? क्यों? मेरा पति इस दुनिया का सबसे बुरा पति है. पूरे महाभारत का सबसे नेगेटिव कैरेक्टर इज युधिष्ठिर. Why? Because he had kept his wife as for that gambling. Why? द्रौपदी बोल सकती है कि मेरे पति ही सबसे बुरे हैं. वो ये बोल सकती है कि दुर्योधन सबसे बुरे हैं. दुर्योधन ने कैसे किया ये चीज मेरे साथ? He is the worst. I will curse दुर्योधन. I will curse युधिष्ठिर. भीष्म पितामह सबसे बड़े होकर भी वो उस सभा में बैठे रहे और उन्होंने द्रौपदी का ये सब कुछ होते हुए देखा. He is the worst. I will curse him. I will blame him. You can blame anybody you want to blame. आप किसी को ब्लेम करना चाहते हो आप करो, बट उससे फायदा कुछ नहीं होना है. बिकॉज इट इज योर ओन कर्मा. आपके ही कर्म में ये लिखा हुआ था. यू हैव ओनली सोन द सीड. गंधर्व बन के कुछ औरतें नहा रही हैं, उनके कपड़े चुरा लेने में मजा आया होगा, शैतानी की, थोड़ा सा बदमाशी किया, थोड़ा सा प्लेजर मिला, बट दैट कर्मा विल कम बैक टू यू. आप खड़े होके देख रहे थे 13 लेडीज को, आप उनको इंसल्ट कर रहे थे, कुछ लेडीज को. यहाँ क्या हुआ? पूरे सभा में लोग खड़े होके आपको इंसल्ट होते हुए देख रहे हैं. So if you want, you can blame, but the actual fact is, it is just because of your own karma that this has happened. So today, you and I, whatever trauma we are going through, whatever problem we are going through, there is no one else that is to be blamed out here. No one else. Only we. It is in our karma. Yes, true. Krishna was also very, very notorious. So we have to understand that today, and why is this story is written in Mahabharata? Why is Krishna saying all these things? कृष्णा ये सब कुछ क्यों बोलना चाह रहे हैं? मैं भी आज महाभारत का ये स्टोरी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमें भी ये समझना होगा that when the gods and goddesses, they were also not out of the laws of karma. भगवान खुद भी, श्री कृष्ण खुद भी कर्मा के रूल्स के बाहर नहीं थे.
कृष्णा को खुद को भी अपने कर्मों की सजा मिली नहीं, उनका वंश भी पूरी तरह से खत्म हो गया किसी के दिए हुए कर्ज के वजह से। कृष्णा खुद राधा से नहीं मिल पाए, क्यों? क्योंकि उनको भी कर्ज दिया गया था, विष्णु एंड लक्ष्मी को कर्ज मिला था। सो इवन गॉड हिमसेल्फ इज नॉट आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। अगर कर्मा, भगवान भी अगर एक कर्मा करते हैं, उनको भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो महाभारत में लिखी हुई ये बातें इसीलिए लिखी गई थी जाते हम आज ये समझ सके कि अगर श्री कृष्ण को भी अपना कर्म के हिसाब से काम करना पड़ा है, अगर उससे भी सफरिंग्स मिली है बिकॉज ऑफ हिज कर्मा, देन वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी विल हैव टू फेस इट ना। अगर महाभारत में द्रौपदी के साथ ऐसा हो सकता है, उनको भी इनकारनेशन थे, she also had so many incarnations. So if Draupadi had to face her karma of her incarnations, then you and I will also have to face, ना? तो हम भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो कर्मा है हमें भी वो भोगना ही होगा। Now coming to the main aspect, this is about the past. This is about the past incarnations. What about the future? अब क्या करना है? अब क्या करें कि फ्यूचर में ये सब हमारे साथ ना हो? What can we do now so that we can save our future incarnations? How can we balance our karma now? Very, very simple answer. Be aware of your karma. Forgiveness, yes, of course. Forgiveness will also help you neutralize your past karma. Whatever mistakes we have done, when you do forgiveness, you can neutralize your past karma. But what about the future? You have to be aware of your karma right now. आज अभी इसी वक्त से शुरू करते हुए अब जितनी जिंदगी बाकी है लाइफ में, हम हर पल इस बात का अवेयरनेस हमें रखना होगा कि हम जितना हो सके सही कर्म करें, जितना हो सके बुरे कर्म को अवॉइड करके चले। एक झूठ बोलना है, सोचिए बोले कि नहीं बोले। क्या हम कोई तरीका निकाल सकते हैं इस झूठ को अवॉइड करने का? एक इंसान को चोट पहुंचानी है, सोचिए चोट पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। क्या हम अवॉइड कर सकते हैं ये चोट पहुंचाना? एक इंसान को, इवन हमारे बच्चों को भी तमाचा मारना है, सोचिए क्या हम अवॉइड कर सकते हैं हाथ उठाना? एक बिजनेस में, एक डील में छोटा सा एक झूठ बोल के एक मुनाफा हो सकता है। छोटा सा झूठ बोलेंगे, छोटा सा चीज इधर से उधर करेंगे, लाखों का मुनाफा हो सकता है। सोचिए आज का लाखों का मुनाफा, कल का करोड़ों का नुकसान होगा। क्या हम अवॉइड कर सकते हैं ये झूठ? Your brain will constantly tell you, don't be a fool. You are going to earn lakhs of rupees by making this small cheating, fraud here and there. Let me do it, let me do it, let me do it. Your brain will tell you. But remember, it will come back to you at like a crores of loss in your future incarnation. करोड़ों का नुकसान हो सकता है आपके फ्यूचर इनकारनेशन में। तब आप रोएंगे, आप सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे करोड़ों रुपए आज मुझसे चले जा रहे हैं, मुझसे छीन लिए जा रहे हैं, लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? In some incarnation you are going to sit and cry, why am I having losses, why am I under loan? You will not get the answer. But what is the actual answer? You have made lakhs of rupees of treachery in your past incarnation. आपने लाखों रुपए का घपला किया है, इस जन्म में करोड़ों रुपए का लॉस आपका हो रहा है। But do we really want that? Do we really want that for ourselves? Not only in this incarnation, but in the future incarnations. हमें सोचना होगा, हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली बिहेव करना होगा। We have to stop thinking about only our present right now.
We have to take efforts for our future. Many people, and there is also a very beautiful concept that think about the present, don't worry about the future. There is a concept which tells you now that only think about your present. Who knows the future? Don't worry about your future. Fine, perfect. I am also telling you, don't worry about the future. But don't do anything wrong today which will destroy your future. आज ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाए. क्योंकि अगेन आई विल से विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है. You cannot mock God. You cannot, like you can mock your friends. You can make your friends a fool. आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को बेवकूफ बना सकते हैं. आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बेवकूफ बना सकते हैं. आपको लग रहा है अरे आज एक इंसान के साथ थोड़ा सा रिश्ता बना लेते हैं, क्या है, वाइफ को तो पता नहीं चलेगा, हस्बैंड को तो पता नहीं चलेगा. लेट मी हैव अ पेन फ्रेंड. Let me have another relationship. It's going to be so fun. Only a Facebook relationship. I won't even meet this person. Chalo, kuch nahi. Husband ko pata nahi chalega. It's fun. It's really fun to have a pen friend, to have this, have that, make some twitchings here and there, hide something here and there. It's really fun sometimes. But भगवान सब देख रहे होते हैं. आप जो काम आज करोगे वो कल आपके पास किस रूप में घूम के आएगा, यू विल नेवर नो. If today you are thinking that why is your husband or why is your wife cheating upon you, then the answer is it's your own karma. You have cheated upon them. You have done something in your past because of which this is happening to you today. It doesn't sound good. सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि अरे मैं ही तो दर्द से गुजर रही हूँ, अब तुम बोल रहे हो मैं ही इसके पीछे कारण हूँ. ये क्या बात हुआ? द्रौपदी तो यही बोलेगी ना, सारी चीजें मेरे साथ हुई, मुझे 5 हस्बैंड्स के साथ शेयर किया गया. क्यों? क्योंकि सिर्फ आपकी माँ ने एक लाइन बोल दिया था. मेरे ही वस्त्र हरण हुए, मुझे ही इंसल्ट किया गया, और कृष्णा बोल रहे हैं कि सारी गलती मेरी ही है. ये कैसा इंसाफ है? मेरे साथ बुरा हो रहा है और सारी गलती भी मेरी ही है. यही सच है, कुछ नहीं किया जा सकता. If you are being insulted by your husband, if you are being left alone by your husband, if you are being cheated by your husband, very sad incident. I sympathize with you. But the truth is, again, it is in our own karma. We have done the same thing in our past, in our previous incarnation. Only then this is happening with us. Nobody else is responsible for it. Again, I will repeat the same line. Maybe I'm repeating it again. But the truth is this. I know it feels bad. It's very bad. And believe me, आप ये मत सोचेगा कि प्याली ये सब कुछ बैठ के बोलती है, बहुत आसान है उसके लिए बोलना, उसकी लाइफ तो परफेक्ट होगी. ऐसा नहीं है. Those who know me, those who have taken sessions from me, you know very well that I had a very traumatic childhood. True. I have gone through many traumas myself. True. And there was a time when I blamed everyone. सबको blame किया, मम्मी को blame किया, पापा को blame किया, husband को blame किया, teachers को blame किया, भाई बहन को blame किया, सबको blame किया. सबकी वजह से मेरे लाइफ में ये चीजें हुई. मैं क्या सोचती, अरे मैं तो छोटी थी. I was only 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years old. मैं क्या गलती कर सकती हूँ? मैंने क्या गलती किया था जिसकी वजह से मुझे ये सारा ट्रॉमा गुजरना पड़ा, ट्रॉमा से गुजरना पड़ा. But now I realize that I had chosen my parents. I had chosen my family. मुझे इसी हस्बैंड से शादी करना था, मुझे इसी फैमिली में आना था, मुझे यही काम करने थे, मेरे साथ यही होना था. Why? Because it was in my karma. I have done those mistakes in my previous lifetimes. Nobody is supposed to be blamed. I cannot blame my parents. I cannot blame my brother, sister. I cannot blame my husband and my family. I cannot blame anybody. It was my karma.
मुझे उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अब मैं ग्रैंड मास्टर की टीचिंग्स के वजह से, प्राणिक हीलिंग के टीचिंग्स के वजह से, नाउ आई नो what to do so that I don't face these situations in my future. अभी मैं बैठ के forgiveness करती हूँ every single day. अभी मैं अपना फ्यूचर को संभालने का कोशिश करती हूँ. आई एम अवेयर ऑफ माई एक्शंस. एक भी इंसान को दर्द ना पहुंचे कहीं पे भी. अगर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी आवाज पे ध्यान रखूं, मैं अपने लैंग्वेज पे ध्यान रखूं, मैं अपने कर्म पे ध्यान रखूं, मैं क्या सोच रही हूँ उस पे ध्यान रखूं. If you get an opportunity, earn good karma. If you can help a person, go ahead and help that person. ये मत सोचिए कि अरे यार फिर थोड़ा सा टाइम जाएगा मेरा, फिर थोड़ा सा एफर्ट जाएगा मेरा, फिर थोड़े से पैसे जाएंगे मेरे. If you can, go ahead and help people. Don't count कितने हेल्प किए. आज मैंने 2 लोगों को हेल्प किया, मैंने टोटल लाइफ में 10 लोगों को हेल्प किया. काउंट मत कीजिए. If you can help, go ahead and help people. Because that will help you neutralize your past karma. That help will come back to you when you need it the most. गिनती करके हेल्प मत कीजिए, गिनती करके गुड कर्मा मत कमाइए कि अरे इस महीने के लिए बहुत हो गया, बहुत सर्विस कर लिया, बहुत गुड कर्मा कमा लिया, अब अगले महीने देखेंगे, अगले साल देखेंगे. गिनती करके मत कीजिए, क्योंकि आप जो गुड कर्मा अभी कमाएंगे, वॉट एवर गुड कर्मा, वॉट एवर गुड थिंग्स यू आर डूइंग राइट नाउ, दैट विल ऑल्सो कम बैक टू यू many times when you need it the most. जब आप प्रॉब्लम में होंगे कोई आके आपको हेल्प करके जाएगा. क्यों? क्योंकि आपके गुड कर्मा में हेल्पिंग का कर्मा है. When you are sick, somebody will come and heal you. Why? Because you have healed somebody else. When you need money, somebody will come and give you the money. Why? Because you have helped someone with your money. Bless people, bless people, bless people. When you do blessings, blessings will come back to you. हमें लगता है कि हम यहाँ बैठ के क्या यूक्रेन एंड रशिया के लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, क्या होगा उससे. रोज 5 मिनट तक का, 6 मिनट तक का ब्लेसिंग करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम. नो. When you are sitting here and you are blessing the people in Ukraine and Russia, believe me guys, one day when there will be a war in your country, people all across the world will sit and bless you and you will get saved. आपका घर बच जाएगा, आप बच जाओगे, क्योंकि दूर दराज कहीं पे बैठा हुआ कोई इंसान मेडिटेशन करके आपको ब्लेस कर रहा था. These are not just actions which we are regularly doing. बस करना है, करते हैं, रोज 4:30 बजे आके मिलते हैं, बस करना है, करते रहते हैं, 5 मिनट का ब्लेसिंग करना है, कर लेते हैं. नहीं, हर एक्शन के पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा कर्मा इन्वॉल्व है. एंड आप जो भी कर्मा आज कर रहे हो, आपको शायद लग रहा है कि कौन देख रहा है. मैं घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के अगर किसी को ब्लेस कर रही हूँ, कोई तो देख ही नहीं रहा है, वो देख रहा है. He is writing down everything. These group of people, they bless the whole world for 5 minutes after their meditation. All of us, हम सबके कर्मा में वो लिखा जा रहा है. हमारे कर्मा में गुड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, कोई हमें ब्लेस करेगा बैठ के. And this is the most important thing. This is the अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में, कर्मा के बैंक अकाउंट में हम यही आज जमा कर रहे हैं. दिस कर्मा, दिस whatever we are saving in our karmic bank account right now, that we will be able to take it with us. जिस दिन हमारा ये शरीर चला जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे हो, करोड़ों रुपए हो, एक एक पैसा भी हम लोग अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे. बट हमारे कार्मिक बैंक अकाउंट में जो रहेगा, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे. हर जन्म में वो हमारे साथ चलता रहेगा, वो कार्मिक बैंक अकाउंट. इसलिए अगर आज आपको मेहनत करनी है ना,
डेफिनेटली बैंक अकाउंट में भी पैसे जमा करने के लिए मेहनत कीजिए, 100% कीजिए, बट ये सोचिए कि मैंने आज अपने कर्मा बैंक अकाउंट में क्या डाला। आज के दिन, हर एक दिन में, एवरी सिंगल डे ऑफ द कैलेंडर, व्हाट एम आई पुटिंग इन माय कार्मिक बैंक अकाउंट? थिंक अबाउट इट, बी अवेयर अबाउट इट। एंड इससे आप देखेंगे, इनिशियली लगेगा कि अरे इतना सोचना पड़ रहा है, इनिशियली लगेगा, कुछ दिनों के लगेगा कि I have to be aware of my thoughts, I have to be aware of my words, I have to be aware of my actions. It is so tough. But after some days, this will become your natural habit. This will become your second instinct, you know. Whenever you hear something, somebody is in trouble, instantly your hands will go up. May this person be blessed. May this trouble be blessed. May this person get the help. Instantly your hand will come up. When you hear somebody needs money, you will instantly check, do I have money? Can I give this person? You will give it. Second thought भी नहीं आएगा, आप instantly दे दोगे. Somebody is not well, instantly your hands will start moving. 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा इस इंसान को, थोड़ा सा हीलिंग करने से. You will see that your life will become a life of service. सब सोचना नहीं पड़ेगा कि इस महीने कितना सर्विस किया. Naturally, your life will become a life of service. And believe me, guys, if your life can become a life of service, a life of good karma, you will be the happiest person on earth. You will get good relationships. You will get a lot of money. You will get prosperity and abundance. You will get good health. A life of service is not a life of sadness. कि एक धोती कपड़ा पहन के, एक सफेद कपड़ा पहन के अब तो साधु संत बन के रहना है, सिंपल सा खाना खाना है, पैसे नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि मैं सर्विस का लाइफ जी रही हूँ. नो 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 नो, डोंट मेक दैट मिस्टेक. If you have a life of service, your life will become better and better every day in every way. Health, wealth, relationships, spirituality, everything will flow to you. Believe me, I am talking with my own experience. मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ. The day I entered into pranic healing, the day I learned about the law of karma, the day Grandmaster taught me about tithing, the day Grandmaster taught me about anything related to energy. मैं आपको बोल रही हूँ, मैं प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद मैंने ज्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई. महीनों महीनों बीत जाता था, मैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन नहीं कर पाती थी. I was working, I used to work 20 hours in a day out of 24 hours. मैं उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी जो चीजें मुझे सिखाई गई थी सब कुछ. लेकिन उस दिन से, I remember it was the 17th of December, I still remember that day, my life changed. Because I got the energy, I got the knowledge, I was aware about my karma, I was aware about what actions I am doing. I was aware about pranic breathing. I was aware कि मुझे सांस के ऊपर, सिर्फ एक सांस आप कैसे लेते हो, उसको भी कैसे आप ठीक कर सकते हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए. So there was so much given to me by Grandmaster, and that's the reason why my life is completely dedicated to him. And I will tell you, I do not have a sad life. I'm very, very happy. Happy from everything. Today, I am really grateful for whatever I have received. My family, my friends, my work, my prosperity, my health, everything has improved. Everything. By the grace of Master, by the grace of God. Thank you. And that is the reason why I'm sharing this with you. I know मैं आज भी extra time चली गई हूँ. I'm really, really sorry for that. But that is the reason why I'm sharing this with you. कि ये मत सोचिए कि अगर इतना अवेयरनेस रखेंगे, अगर थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलेंगे, अगर थोड़ा सा भी बुरे काम नहीं करेंगे, तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी. ऐसा नहीं है. लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी. लाइफ खुशियों से भर जाएगी. एंड गुड खुशियां,
जहां पे आपको झूठ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़े, जहां पे आपको लोगों को चीट करने का जरूरत ही नहीं पड़े, still money will come to you, still happiness will come to you, still your loved ones will stay with you. Try it out. एक बार विश्वास करके, थोड़ा सा अवेयरनेस रख के अपनी जिंदगी को इस तरह से करके देखिए, आपकी ये वाली जिंदगी जो गुजर रही है वो भी बेटर होगी, एंड आपके फ्यूचर इनकारनेशंस भी बेटर होंगे. Your future incarnations will also get affected by whatever your actions are today, your thoughts are today, your words are today. This is the way in which we can save our future incarnations. वरना हर जन्म में आके रोना पड़ेगा, हर जन्म में आके तकलीफें सहनी पड़ेंगी, हर जन्म में एक नया ट्रॉमा मिलेगा, just to balance our karma of the past. Let's do it now, from today, from this moment onwards. कि अभी से हम लोग अवेयरनेस रखेंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम the 88 people who are right now in the session, we will change our lives, we will change our future, our karma, and our future incarnation. Okay, so on that note, let us start with the forgiveness. We will do a quick forgiveness because we are already beyond time. So we will do a quick forgiveness for whatever we have done in our past, for whatever trauma we have caused to other people in the past, and we will bless them with lots of happiness so that their karma can also improve. Okay, so I request each one of you, please close your eyes, relax yourself, take a deep breath, and first of all what we have to do is say thank you, God, for blessing us with this beautiful life. Thank you, God, for giving us this lifetime. We are super grateful for whatever we have received, for our family members, for our health, for our money, for our business, for our house, for our everything. Thank you, thank you, thank you. We are so grateful to you that you have blessed us with all these things. Now, slowly and gently imagine yourself to be a brilliant, beautiful white light. You are the soul. Imagine another beautiful white light in front of you. This white light is all the souls who were connected to us through all our incarnations. Put your hands in front of your heart and gently say Atma Namaste to each and every soul without an exception. Atma Namaste. Atma Namaste. I, the soul, humbly salute the divinity within each one of you. We are all children of God and we all make mistakes. I forgive each and every one of you for whatever mistakes you have done, for whatever hurt and pain you have caused to me in this incarnation, in all my past incarnations. Whether you have caused me any trauma, physically, emotionally, mentally, verbally, financially, sexually, spiritually, whatever trauma you have caused to me, whatever hurt and pain you have caused to me, I forgive you. I forgive you. I forgive you. Because I realize it was all my own karma that has come back to me. I completely forgive you, unconditionally forgive you for now and forever. You are forgiven and the matter is forgotten. Please forgive me for my mistakes. Please forgive me for all the hurt and pain that I have ever caused to you. Please forgive me if I have caused you any trauma in any incarnation, whether physically, mentally, emotionally, verbally, financially, sexually, or spiritually. I am truly, deeply, sincerely sorry, knowingly, unknowingly, intentionally, unintentionally. If I have caused you any hurt and pain, please forgive me. I, the soul, I, the child of God,
I have learned my lessons. I have realized that any word I speak, any thought I think, any action I do has so much of impact on other people. I, the soul, I will be aware of my words, thoughts, and actions. I, the soul, I will be more aware that I only create good karma. I only help people. I only bless people. I, the soul, I have learned my lessons. So please forgive me for my past. May the divine supreme God neutralize all our negative karma. May the divine supreme God bless each and every one of us with his love, mercy, kindness, compassion, and forgiveness. May peace be with each one of you and with me. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. May all the negative cause that is attached to us be cut, cut, cut. Put your hands in the blessing position. To the divine, divine, supreme God, all loving, all merciful God, thank you for blessing each and every one of us. Thank you for blessing all the souls who were connected to us in our past incarnations with love, peace, happiness, joy, with your mercy, with your compassion and forgiveness. Thank you for neutralizing all the negative karma of the people. Thank you for blessing us with the inner strength so that we can only do what is right and refrain ourselves from unwholesome actions, thoughts, and behaviors. Thank you, God, for blessing us with your priceless blessings. Our limitations are not your limitations. In full faith, so be it, so be it, so be it. Now let us together invoke that the divine energy that will come down within us during this meditation, it is going to heal us completely. It is going to heal all our chakras, our organs, our bodies, and it is going to heal our past, our present, and our future. Thank you, God, for your priceless blessings. We are all super, super receptive in full faith. So be it.